तो हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आज हमारे खाने में सोयाबीन करी देख सकते हैं और एक वेज दाल है इसमें। और मेरे थाली में है ये ब्रोकली और आलू मिक्स करके एक भजिया, ये आलू फ्राई, थोड़ा सा क्रिस्पी है, और नींबू, टोमेटो, गाजर एंड आलू का भरता ये वाला। तो शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। और आज जो हमारे चैनल में नए आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये चैनल नया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस नए चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। एंड शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए, आगे देखते रहिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। गाइस आप लोग मेरा वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल नया है और मुझे और मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़। ये गाजर,
गाइस मैं मेरा और एक चैनल है जहाँ मैं रेसिपीज़ की वीडियो डालता हूँ, मतलब कुकिंग चैनल है। तो आप लोग उस चैनल में जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लीजिए। नींबू से खाते हैं दोस्तों, देखते रहिए, नींबू से अच्छा लगता है। ट्राई कीजिए कभी घर में। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का मुकबांग चैलेंज ख़त्म हुआ। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस नए चैनल को। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और जिन लोगों को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और मेरा न्यू और एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।